Good morning and welcome back to this class. So question is find Laplace transform for t power 3. So how to solve this question? So we know that the formula for Laplace transform of t power n equal to gamma n plus 1 upon s power n plus 1. So here here n equal to 3. So by using this formula, Laplace of t power 3 equal to gamma 3 plus 1 upon s power 3 plus 1 equal to gamma 4 upon s power 4, and we know that gamma n equal to gamma n equal to n minus 1, n minus 2 and 1. So by using this concept, we have gamma 4 equal to gamma 4 equal to 3, 2 and 1. So we get 6 upon s power. Next question is find the Laplace transform of t power 3 by 2. So by using the formula of t power Laplace of t power n equal to gamma n plus 1 upon s power n plus 1. So Laplace of t power 3 by 2 equal to here n equal to 3 by 2. So Laplace of t power 3 by 2 equal to gamma 3 by 2 plus 1 upon s power 3 by 2 plus 1, and we have gamma of 5 by 2 upon s power 5 by 2. On simplifying, gamma 5 by 2 equal to 3 by 2 into 1 by 2 into gamma 1 by 2 upon s power 5 by 2. And again further simplifying, we have 3 under root pi upon 4s power 5 by 2. Why? Why gamma 1 by 2 is equal to under root of pi. So by using this value of gamma 1 by 2, we can write this result as 3 under root pi upon 4s power 5 by 2. Next question is find the Laplace transform of t power minus 3 by 2. Here n equal to minus 3 by 2. So Laplace of t power minus 3 by 2 equal to gamma minus 3 by 2 plus 1 upon s power minus 3 by 2 plus 1, and equal to gamma minus 1 by 2 upon s power minus 1 by 2. So on further solving, we know that gamma n equal to gamma n plus 1 upon n. So by using this formula, we have gamma 1 minus 1 by 2 equal to minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2. So this minus gamma 1 by 2 is converted into this value. So we have Laplace of t power minus 3 by 2 equal to minus 1 by 2 plus 1 gamma upon minus 1 by 2 into s power minus 1 by 2, or minus 2 into gamma 1 by 2 upon s power minus 1 by 2, or finally we have minus 2 into under root s into under root pi. Pi under root pi equal to gamma 1 by 2. Gamma 1 by 2 equal to under root of pi. The answer. So next question is find the Laplace transform of t power minus 2. So here n equal to minus 2. So Laplace of t power minus 2 equal to minus 2 plus 1 upon s power minus 2 plus 1,
or we can write this value equal to gamma minus 1 upon s power minus 1 is the answer. So next question is find the Laplace transform of e power 2t. So we know that the formula for Laplace of e power at equal to 1 upon s minus a. Here a equal to 2. So by using this formula, Laplace of e power 2t equal to 1 upon s minus 2 is the answer. And the Laplace transform of e power minus 7t. So as we know that Laplace of e power at equal to 1 upon s minus a. So here a equal to minus 7. So Laplace of e power minus 7t equal to 1 upon s plus 1. The answer. Next question is find the Laplace transform of 5 power t. So हमारे पास जितने भी फॉर्मूला हैं वो यहाँ पर कोई भी सेटल नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे? We can rewrite this question as Laplace of e power log 5 power t. So अब हम यहाँ पर e power 80 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. Laplace of e power 80 equal to 1 upon s minus a. So यहाँ पर a equal to log 5 लिखेंगे. So finally हमारा क्वेश्चन Laplace of e power log 5 power t and इसको हम लिख सकते हैं e power t into log 5. Here this is equal to small a. So 1 upon s minus log 5 is the answer. Next question is find the Laplace transform of sin 3t and Laplace transform of cos 3t. So we know that Laplace of sin 8t equal to a upon s square plus a square. Here a equal to 3. Here this 3 equal to a. So Laplace of sin 3t equal to 3 upon s square plus 3 square means s 3 upon s square plus 9. And we know that Laplace of cos 8t equal to s upon s square plus a square. So here a equal to 1. Here a equal to 1. So Laplace of cos t equal to s upon s square plus 1 square means s upon s square plus 1 is the answer. Next question are find the Laplace of sin hyperbolic t and Laplace of cos 5t. So we know that the formula for Laplace of sin hyperbolic t equal to a upon s square minus a square. Here a equal to 1. So Laplace of sin hyperbolic t equal to 1 upon s square minus 1 square. Finally 1 upon s square minus 1. And we know that the formula for Laplace of cos hyperbolic at, so equal to s upon s square minus a square. So cos hyperbolic 5t equal to cos hyperbolic 5t equal to s upon s square minus 5 square means s upon s square minus 25. The Laplace transform of t square plus at plus b. So हम यहाँ पर हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है. सो हम इस एल ऑपरेटर को सभी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो वी कैन राइट लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी इक्वल टू
लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर लाप्लास ऑफ ए टी प्लस लाप्लास ऑफ पी एंड हम we know that a and b are constants, so we can write this value as Laplace of t square plus a Laplace of t plus b Laplace of 1, and we know that Laplace of t power n equal to gamma n plus 1 upon s power n plus 1. So Laplace of t square equal to 2 upon s power 3 and Laplace of t equal to 1 upon s square, and we know that Laplace of 1 equal to 1 upon s means हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस इस फॉर्मूला में अगर n इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें लाप्लास ऑफ 1 वैल्यू मिलती है, मीन्स गामा 1 upon s power 0 plus 1 and this is equal to 1 upon s. So ये वैल्यू आपको 1 upon s देने वाली है। On simplifying we have final answer is 2 plus as plus bs square upon s power 3. The answer the Laplace transform of under root t plus 1 upon under root t power 3 is a very important question. इसका ये पार्ट जो सर्कल में है महाराष्ट्र सेट 2015 के पेपर में आएगा। सो कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव लाप्लास ऑफ अंडर रूट टी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टी पावर 3 इक्वल टू, इस पावर 3 को हम ब्रेक करके लाप्लास ऑफ अंडर रूट टी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर कर सकते हैं। एंड a plus b whole square means a plus b whole square means a square plus b square plus 2ab. So by using this formula we have this value equal to t plus 1 upon t plus 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर लाप्लास ऑफ t पावर 3/2 प्लस t पावर 1/2 प्लस t पावर -1/2 प्लस t पावर -3/2 प्लस 2t पावर 1/2 प्लस 2t पावर -1/2, और further solving we can write this value as Laplace of t power 3/2 Laplace of t power 3/2 plus 3 Laplace of t power 1/2 plus 3 Laplace of t power -1/2 plus Laplace of t power -3/2, and we know that Laplace of t power n equal to gamma n plus 1 upon s power n plus 1. So by using this formula, first term में n equal to 3/2, so we can write gamma 3/2 plus 1 upon s power 3/2 plus 1. Here n equal to 1/2, so we have 3 into gamma 1/2 plus 1 upon s power 1/2 plus 1, and here n equal to minus 1/2 minus 1/2, so we have 3 into under root of -1/2 plus 1 upon s power -1/2 plus 1, and here n equal to -3/2, so this value equal to gamma of -3/2 plus 1 upon s power -3/2 plus 1. On simplifying all terms we have gamma 5/2 upon s power 5/2 plus 3 gamma 3/2 upon s power 3/2 plus 3 gamma 1/2 upon s power 1/2 plus gamma of -1/2 upon s power -1/2. So next we know that gamma of 5/2 means 3/2 into 1/2 into gamma 1/2. So this value gamma 5/2 equal to 3/2 1/2 into gamma 1/2. Gamma 3/2 equal to 1/2 into gamma 1/2, and gamma 1/2 is equal to gamma 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और इस -1/2 हम लिखेंगे gamma of -1/2 equal to gamma of -1/2 plus 1
अपॉन -1/2। इसको हम लिख सकते हैं गामा -1/2 + 1 अपॉन -1/2। ऑन सिंप्लीफाइंग बी है गामा 1/2 इक्वल टू √π। सो ये वैल्यू भी हम यूज करेंगे यहाँ पर और फाइनल आंसर लिखेंगे 3 √π अपॉन 4 s⁵/2 प्लस 3 √π अपॉन 2 s⁵3/2 प्लस 3 √π अपॉन s⁴1/2 माइनस 2 √π अपॉन √s इज द फाइनल आंसर। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t² - 2e⁻t plus sin hyperbolic 3t plus 5 cos 4t. So solution, given that this value and we know that Laplace transform linear transform होता है, so we have 3 into Laplace of t⁻2 minus 2 Laplace of e⁻t plus Laplace of sin hyperbolic 3t plus 5 Laplace of cos 4t. So फर्स्ट वाली वैल्यू में लाप्लास ऑफ t⁻n इक्वल टू गामा n+1 अपॉन s⁻n+1 फॉर्मूला यूज करेंगे। हियर n इक्वल टू 2, सो ये वैल्यू इक्वल टू होगा 3 गामा ऑफ 2+1 अपॉन s⁻2+1 माइनस ये फॉर्मूला रहता है लाप्लास ऑफ e⁻at इक्वल टू 1 अपॉन s-a। सो इसमें a इक्वल टू 1, सो इसको लिखेंगे 1 अपॉन s-1 एंड लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t मीन्स साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो a इक्वल टू 3, so we have 3 upon s square minus 3 square and Laplace of cos 4t equal to means we know that Laplace of cos 80 equal to s upon s square plus a square means ये वैल्यू इक्वल टू s upon s square plus 4 square और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हमें 6 अपॉन s पावर 3 माइनस 2 अपॉन s माइनस 1 प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 इसका आंसर मिलता है। फाइंड लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा t प्लस अल्फा एंड वी हैव ओमेगा t प्लस अल्फा मीन्स साइन a प्लस b, sin a plus b. So we know that formula for sin a plus b equal to sin a cos e plus cos a sin b. So by using this concept, we have Laplace of sin omega t plus alpha equal to Laplace of sin omega t into cos alpha plus cos omega t into sin alpha, or we have cos alpha into Laplace of sin omega t plus sin alpha into Laplace of cos omega t. क्योंकि यहाँ पर cos अल्फा एंड sin अल्फा दोनों कांस्टेंट हैं, सो लाप्लास के बाहर हम लिखेंगे एंड वी नो दैट फॉर्मूला फॉर sin लाप्लास ऑफ sin at इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो हियर a इक्वल टू ओमेगा, सो लाप्लास ऑफ sin ओमेगा t इक्वल टू ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर and Laplace of cos omega t means by using the formula of Laplace of cos at equal to s upon s square plus a square. So here a equal to omega, so we can write this Laplace of cos omega t equal to s upon s square plus omega square. So ये फाइनल स्टेप हमें मिलता है cos अल्फा इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिलता है हमें ओमेगा cos अल्फा प्लस एस साइन अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।